Assalamu alaikum, bachcho. Uh, Beta, a lot of you had confusion in how to do these trig questions that are in P1 जिनमें calculator allowed नहीं है तो ज़रा please देख लें. Let's have a look. What he usually does is he gives you some values for sine theta, cos theta, tan theta, and then he expects you to solve the question. Now, if you look at it in this case, it's an isosceles triangle, so currently not a right angle triangle. So the first thing I would do is I would draw this line from B all the way down to AC such that we have a 90-degree angle. Now, since and only since this is an isosceles triangle because of these two lengths given as equal to each other, I can now say that this is 16 and this is also 16. ठीक है? So the 32 gets divided in two equal parts. तो अब जरा आप सिर्फ अगर इस highlighted triangle को देखें तो we have a right angle triangle. We have a right angle triangle with an angle theta. We don't know what theta is. That's okay. But according to theta, this is the adjacent, and we need to find the hypotenuse, right? AB find करनी है हमने first part में. So what I would do is I would say that okay, since we know the adjacent, I do cos theta is equal to 16 over the hypotenuse, which is AB. I don't know what AB is, so I just wrote AB in place of that. Now, how do we go further? यहाँ पे normally calculator चाहिए होता है, but यहाँ पे in P1, what he's done is he's already given you a value for cos theta. टेबल में देखें जरा, उसने बता दिया आपको कि cos theta is 8 over 17. So what I'm going to do is I'm going to replace this cos theta with its value, जो कि उसने मुझे क्वेश्चन में दी हुई थी. मुझे कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है. मैं इसको 8 over 17 लिखूंगा in place of the cos theta, which is equal to 16 over AB. And now I'll just cross multiply. So I'd have 8 times AB is equal to 16 times 17. I would not recommend calculating this because it's a P1. You want to keep the calculations as simple as possible. Next step में आप 8 को नीचे ले जाएं underneath the entire thing so that you can cancel this 8 with the 16 very simply 2 times, and now you can do 2 times 17, which is 34. So 34 is the length of AB. So here, without using any calculator, we were able to find out the length of AB because the question told us the value of cos theta as 8 over 17. ठीक है. बाकी values क्यों बताई उसने sin theta tan theta की, so that you have to decide which one to choose. अगर वो सिर्फ cos theta की बता देता तो आपको आइडिया हो जाता कि ओ अच्छा यहाँ पे cos theta यूज होना है. तो because he wants the student to think which of the three to use, that is why he's told us all three of them. Okay. So now if you want to find out area of triangle ABC, जरा देख लें. एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालने के लिए वैसे तो मैंने आपको 1/2 AB sin C भी बताया हुआ है, राइट? सो 1/2 AB sin C, इन विच आई सेड के अगर नॉन राइट ट्राइंगल है, आई एम नाउ कंसिडरिंग द इंटायर ट्राइंगल, ऑल ऑफ दिस. सो इसमें बेटे ये 32 है, ये हमने अभी 34 निकाली है. दैट्स योर ए एंड बी. सो 1/2 इंटू 32 इंटू 34 टाइम्स साइन उसी एंगल का जो इन दोनों साइड्स के दरमियान में होता है, तो साइन ऑफ थीटा. ओके, तो मैं यहाँ पे साइन थीटा लिख देता हूँ. दैट गिव्स यू 1/2 टाइम्स 32 टाइम्स 34 टाइम्स साइन थीटा भी उसने बता दिया आपको 15 over 17. तो यहाँ से 15 over 17 उठा लें, साइन थीटा की जगह लिखते हैं. एंड देन ऑल यू हैव टू डू इज cancel and figure out the value. 17 goes into 34 two times. 2 goes into 32 16 times. So we've got 16 times 2 times 15. 2 times 15 is 30. So we have 16 times 30. That gives us 480. एक तरीका ये था. दूसरा तरीका ये था कि आप ऑलरेडी ये ड्रॉ कर चुके थे, ठीक है, आप ये हाइट फाइंड आउट कर लो. अगर ये फॉर्मूला नहीं आता, या in any case you don't want to use it, then what you do is you find out this height of the triangle. ये जो हाइट है, ठीक है. अब वो हाइट कैसे फाइंड करें? हाइट फाइंड करने के लिए अगेन जो पहले मैंने ट्राइंगल हाईलाइट किया था उसी को देखें. हैव अ लुक एट इट. इसी ट्राइंगल में, नाउ सिंस इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, द हाइट इज एक्चुअली ऑपोजिट टू थीटा. सो आई एम गोइंग टू से sin theta is equal to opposite, which is the height, over the hypotenuse, which is AB, और AB हम निकाल चुके हैं 34, तो मैं इधर 34 लिख देता हूँ.
और फिर से वही बात, साइन थीटा उसने मुझे बताया है 15/17, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 15/17 is equal to opposite over 34. And now I just multiply this 34 to the other side. We'll get 15/17 times 34 is equal to the opposite. Okay, cancel this two times. We have opposite as 30. So जी हाइट भी 30 आ गई. अब हाइट 30 है और इस पूरे ट्रायंगल की अगर हम देखें हाइट 30 है और बेस 32 है. So what I'm going to do is I'm going to write 1/2 into 30 into 32. You know, because um, 1/2 into बेस into हाइट होता है, तो बेस 32 है, हाइट 30 है. आप इसको कैंसिल करें 16 टाइम्स, 30 टाइम्स 16 इज अगेन 480. तो दोनों तरह से आंसर सेम आएगा. हाइट निकाल के कर लो या वो ए बी साइन सी वाला फॉर्मूला निकाल के कर लो. ठीक है. um, अच्छा, ये जो साइन ए बी डी कॉस ए बी डी, इफ यू लुक एट इट, ए बी डी इज दिस एंगल, right, which is part of this non right angle triangle. This thing आई एम डाउटफुल दैट विल बी टेस्टेड. तो इसलिए इसको भी आप इन इस तरह वालों को छोड़ दें जिनमें ऑप्ट्यूस एंगल होता है. ऑप्ट्यूस एंगल वालों को छोड़ दें. दिस इज अ थिंग वी डू इन ग्रेड 10. सो फॉर नाउ यू कैन स्किप दीज पार्ट्स. दिस वन यू कैन स्किप वेयर द एंगल इज ऑप्ट्यूस. ऑप्ट्यूस का मतलब होता है बिगर देन 90. तो ऑप्ट्यूस एंगल वाले जो ये इस तरह वाले पार्ट्स हैं उनको आप स्किप कर दें. बट टू फाइंड बी सी, लेट्स सी व्हाट वी डू. नाउ इफ यू लुक एट इट, इफ यू लुक एट इट, बी सी बेटा ये वाली साइड है, राइट. और ये जो ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल क्लियरली, right. In this right angle triangle, the angle we have is B, and this again is adjacent to B. So this is adjacent, right. We have the hypotenuse and we want to find out the adjacent. तो मैं कहूँगा cos B is equal to adjacent, which is BC, over hypotenuse, which is 4. अगेन cos b कहाँ से आएगा? cos b भाई साहब ये दिया उसने 0.53. That's the value of cos b. So I'm going to replace cos b with 0.53, and that is equal to bc over 4, and then I just multiply this 4 there. So we get bc as 4 times 0.53, which happens to be, अब इसको बगैर कैलकुलेटर के करना है तो 4 times 53 कर लो. 4 times 53 करोगे तो कितना आएगा? 159. Yeah, 159. And two decimal places थी. नहीं 159 नहीं आता, गलत बोला है मैंने. 4 टाइम्स करें हम, ठीक है. 212. So 2, yeah, 212, राइट. 4 टाइम्स 53, अगर ना या आ रहा हो तो 53 टाइम्स 4 कर दें, ये 12. 5 टाइम्स 4 इज और ये 1 कैरी हो गया. 5 times 4 is 20 and 1, so 212, right. So 212, and then there were two decimal places in total, so we move the decimal 2 steps back. 2.12 is the length of BC. ठीक है, 2.12. All right. What special kind of number is under root 89? It's an irrational number. Irrational number. Calculate AB. This is Pythagoras theorem. इसमें angles involved नहीं है. तो root 89 का square is equal to AB का square plus 5 का square. 89, because square root and square cancels out, is equal to AB square plus 25. Take this to the other side. We get AB squared as 89 minus 25, which is 64. So AB is the square root of that, which is 8. So we get AB as 8. ये आ गया ये वाला. Let's look at this question. Here we have two angles written and we have two, इधर इधर जो उसने टेबल भी दिया है वो भी दो एंगल्स करे हुए. So basically sin x, uh, sine of A is given as 3 over 5, sine of B is given as 24 over 25, cos of A is given as 4 over 5, cos of B is given as 7 over 25, and all of that. So again, DAC को देखो पहले पार्ट में उसने कहा है write down the value of cos DAC. DAC is this obtuse angle, so I'm going to ignore it for now, right? And then we have to find the length of AC. अब जरा length of AC पे आए जी. But a length of AC is this guy, right? If I draw this line, the height of the triangle, okay? So using this triangle and angle B, I can find this height. Why do I need to find this height?
उसने तो कहा ए सी निकालो. प्रॉब्लम विद ए सी इज दैट ए सी वाले ट्राइंगल में हमें कोई भी लेंथ नहीं पता. वी डोंट नो एनी लेंथ व्हाटसोएवर. तो इसलिए हमें पहले यहाँ से स्टार्ट करना पड़ रहा है. We have 10 as the hypotenuse, b is the angle, and opposite is what I'm looking for. So what I'm going to do is I'm going to say sine of b is equal to the height opposite over the hypotenuse, which is 10. Sine b कहाँ से आएगा? Table से. So sine b is here, 24 over 25. That's what sine b is. तो मैं इसको replace कर दूंगा literally 24 over 25 से. Opposite over 10. उधर multiply करा दो. 10 times 24 divided by 25 is equal to the opposite. Cancel this 2 times and this 5 times, and then you don't have a lot to cancel. So 48 over 5, which happens to be 9.6. ये height आ गई बेटा, 9.6. ठीक है, इसको आप वैसे फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो. 48 over 5 रखना है तो 48 over 5 ही रहने दो, doesn't matter. Now this is 9.6, and I want to find out this. Once again, now if I look at this triangle, the angle is A, 9.6 is the opposite, and AC is the hypotenuse. तो मैं अब कहूंगा sine of A is equal to 9.6 over the hypotenuse. ठीक है. अच्छा, अब साइन ऑफ ए कितना है? साइन ऑफ ए है 3 over 5. तो मैं इधर लगा दूंगा 3 over 5 is equal to 9.6 over the hypotenuse, and I just cross multiply to figure this out. So we have 3 times the hypotenuse is equal to 9.6 times 5. पहले देखो 9.48 को 5 से डिवाइड किया था तो 9.6 आया था. तो 9.6 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो भी 48 आना चाहिए. इधर वी हैव 3 times the hypotenuse. So hypotenuse comes out as 48 divided by 3, which is 16. AC is 16. That is how we do these types of question. अब यहाँ पे देखो, write down the exact value of tan 45. ये थोड़ा सा ट्रिकी है. देखो जरा tan 45. 45 का मतलब है, जरा देखना प्लीज. 45 means if this is 90, it's a right angle triangle. If one angle is 45, then the other would also be 45, 100%. There's no way it can be something else. क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स ने 180 बनाना होता है. एक एंगल अगर 45 का, एक तो 90 है, राइट एंगल ट्राइंगल है इसलिए एक तो 90 है. The other one would definitely be 45. So if this angle and this angle are the same, that means this side and this side are also the same. Okay. तो बेटा tan 45 का मतलब फिर होगा, अगर मैं इधर ए बी सी कर दूं इसको, opposite over adjacent, so AB over BC. Now since AB and BC are literally the same, तो किसी भी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर भी सेम हो डिनोमिनेटर भी सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1. So tan 45 without a calculator is 1. ठीक है, दोबारा समझो. अगर लेट्स से ये 10 है और ये भी 10 है तो मैं कहूंगा जी tan 45 is equal to 10 over 10, cancels to 1. अगर ये 10 नहीं थी, लेट्स से ये 4 थी और ये भी 4 थी, क्योंकि इक्वल तो है, तो मैं कहूंगा tan 45 is equal to 4 over 4. That also is 1. So no matter what the length of AB and BC is, as long as the angle is 45 and it's a right angle triangle, tan 45 is going to be 1. ठीक है? So please remember that. This was a good question. Now, ये नीचे वाले पार्ट को देखें. नीचे वाले पार्ट में वो कह रहा है, again we have a right angle triangle. This is the adjacent, this is the hypotenuse. So I know that to find out x, I need to use cos of 60 is equal to the adjacent over hypotenuse, which is x. Now cos 60 की value उसने बता दी 0.5. cos 60 is 0.5, so I'm going to use 0.5 is equal to 4 over x. Multiply 4 divided by 0.5, we get 8. ठीक है जी, 8 आ. All right, write down the exact value of cos 30. ये आपको भी नहीं पता होना चाहिए. Given that sin 30 is 0.5, sin 30 is 0.5, so what is the value of x? Once again, sin 30 is equal to x over 12. Sin 30 0.5 है, 0.5 लिख दो. x over 12, 12 को तो multiply कराओ. X is equal to 12 times 0.5, which is 6. So 6 is the answer. Okay? I hope you understand now. All right.